अंधेरे हो गया अंधेरे, आंखें सारी बंद संग हो गया अंधेरे, हो गया अंधेरे, दया करो देव पारदाता, गुरु खीरे पारदान रूहा सानिया पार गंगा, गुरु खीरे पारदान रोबत गया गिटार ले में पा मेरे अधेयार में मिट्टी तेरे बिना और किसे मुने जान दी, किसे मुने जान दी, मेता तेरे बिना और किसे मुने जान दी, किसे मुने जान दी, जग तेरे बिना सुने हो गया, गुरु खीरे पार गाने, रूहा साइया पार लंगा, गुरु खीरे पार गाने, रोबा तेरी आगे थार ले में पा मेरे जाने दुख सारे मेरे मेरा जानी मेरा पाजानी, भूल जाने दुख सारे मेरे मेरा जानी, आके मेरा पाजानी, हुआ जाए दीनुना तरफा, गुरु खीरे पार पार लंगा, गुरु खीरे पार दान में, रोबत ले आगे चार ले में पा मेरे आले आरमान रे, मेता तेरे बिना हो किसे मुने जानी, किसे मुने जानी, मेता तेरे बिना और किसे मुने जानी, किसे मुने जानी, जग तेरे बिना सुन हो गया, गुरु खीरे पार दान रे, रूहा सानिया पार लंगा, गुरु खीरे पार दान रे, आगे तार ले में पा राधा वाणी कबीर साहब साकी संग गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये परम संत सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. ये कल की वाणी है जो आधी तो आज एक दिन और लेके फिर कल नाम भक्ति के बारे में ले। This is the continuation of the Bani I had taken yesterday, and we had satsang on this today. Tomorrow I will take on Naam Bhakti.
तो कबीर साहब जी इशारा देते हैं। एक समय कबीर साहब ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान के अंदर गुरु और परमात्मा दोनों एक ही साथ प्रकट हो गए। तो अभी कबीर साहब सोच में पड़ गए, अब किसको नमस्कार करो। Once when Kabir Sahib was doing his meditation, both his master and God Almighty both came and gave him darshan together, and he had a question mark as to whom should he bow down first. क्योंकि दोनों बड़े हैं, परमात्मा भी अपनी जगह बड़ा है, गुरु भी अपनी जगह बड़ा है, तो उनको अब द्वैत में पड़ गए कि दोनों बड़े हैं, किसको नमस्कार करूं। अगर गुरु को नमस्कार करता हूं तो परमात्मा नाराज होता है, परमात्मा को नमस्कार करता हूं तो गुरु नाराज होता है। So he had a question mark because both were great beings that had come in front of him. One side there was the master and the other side was God Almighty. And if he bowed down to the master, he would displease God Almighty. And on the other hand, if he would go down to God Almighty, he would displease the master. तो विचार करके, बहुत विचार करके बाद में सद्गुरु के चरणों में बलिहार जाते हैं। कहते हैं कि हे सद्गुरु, जब तूने परमात्मा के बारे में जानकारी दी, तब जाके परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हुआ। नहीं तो पहले सदियों से परमात्मा हमारे अंदर था, लेकिन कभी वो दर्शन नहीं दिया। So he thought deeply, and then he felt that it is only because of the master that he has been able to realize and manifest God Almighty within. Because had his master not showered grace on him, he would never have been able to manifest God Almighty. तो कहते हैं कि परमात्मा, सब जितने भी आत्माएं हैं, सबके अंदर परमात्मा का वास है। ये आत्मा कुछ भी कर्म करती है, परमात्मा मना नहीं करता है कि ये बुरा कर्म है, तू नरक में जाएगा, तेरे को सजा होगी। परमात्मा चुपचाप रहता है, तो ऐसे परमात्मा से क्या फायदा। God Almighty resides in each and every being, and he sees that each being does so many different types of karmas. They do sin and they do good and bad karmas. So the God Almighty is witnessing all of that. He doesn't tell that jiva or that being that he is doing something wrong for which he will be going into hell. Instead, he just witnesses what is happening. हम बुरे कर्म करके सुअर के शरीर में गए, परमात्मा भी सुअर के शरीर में आया। हम गद्दे के शरीर में गए, परमात्मा भी गद्दा बना, लेकिन कभी नहीं कहा कि ऐसा कर्म मत करो, ये अच्छा नहीं। We did bad karmas, and from human beings we went into the lives of pigs. There also God Almighty came with us. And we did bad sins, we became donkeys. There also God Almighty also became a donkey with us. So he never told us that don't do these sins because by these sins you will become such. तो जब गुरु मिले और उन्होंने अंदर जाने का रास्ता तरीका दिया, तो गुरु के कृपा से वो परमात्मा का दर्शन हुआ। तो हे सद्गुरु, तो मैं तेरे चरणों में बलिहार जाता हूँ। So he said it is only with the grace of the master that I have been able to understand God Almighty and manifest God Almighty. So he bows down first, he chooses to bow down first to his master. तो इसीलिए सब संतों ने हमेशा अपने गुरु की महिमा का बयान किया है। चाहे कोई भी संत हो, सब अपने सद्गुरु को मान बढ़ाई दिया है, वो परमात्मा से ऊपर अपने गुरु को माना है। That is why in all the banis of the masters, you will always find that they have sung praises of their masters. They have always held their masters higher than God Almighty himself. और वो परमात्मा जो भी संत जीव को लेके आता है, सबको इज्जत देता है और अपने गुरुमुख शिष्यों को पढ़ाई देता है,
वो अपना अपमान सह सकता है, लेकिन अपने गुरुमुखों का अपमान नहीं सह सकता। So when we manifest God Almighty, He welcomes us and He has a lot of respect for the masters and He welcomes them. He can withstand insult which when we insult God Almighty, He can withstand that. But He cannot withstand an insult if someone says something bad about the master. बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी सो बार, बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी सो बार, मानुष से देवता किया गर्दन लागी बार। तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि हे सद्गुरु, मैं तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि बलिहार जाता हूँ, क्योंकि एक मलिन आत्मा से, मानव शरीर से आपने भजन सुमरन करा के अंदर ला के जो है कि एक महान पदवी दिया जो देवी देवताओं से भी पूछा है। So Kabir Sahib says that I sacrifice myself millions of times at the feet of my master because he has transformed me from this human being, this suffering human being, and transcended me into God Almighty. हम कहते हैं कि गुरु ही है हर तरह से हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेके नरकों में जाने वाले कर्मों को काल को हिसाब चुका देता है नामदान के दिन, और भी कुछ भजन सुमरन करा के खत्म कर देता है, दूसरा कुछ दया दृष्टि डाल के खत्म करता है। तो गुरु एक शिष्य पे इतना ही उपकार करता है, उसका कोई बयान नहीं। The master, when he initiates the soul, he takes all those big karmas which are going to result in that soul having to go into hell. So he assumes all of those karmas and washes them in the holy Mansarovar, and he then makes the jiva do meditation, and with the meditation and simran he washes off some of the sins of that soul, and also with the darshan he washes off the soul, the deeds of the jiva. That way he is extending limitless grace on that jiva. तो इस तरह से जीव की पूरी सफाई करके मंडल बाई मंडल साथ रहते हुए हमें जो है सतलोक सचखंड पहुंचाता है, जो हमारा सच्चा देश है, सच्चा घर है, जहाँ से सारी आत्मा आई हुई है। And then he stays with the jiva, with the soul and the mind, and he takes that soul back through all the planes. At each step he is with the soul, and he takes the soul back to God Almighty from where it has come. तो सत्पुरुष भी संतों को ज्यादा महत्व देता है। जिस भी सिख को जो भी गुरु लेके जाता है, वो सत्पुरुष उसी गुरु के रूप में वहाँ पे परमात्मा का रूप बना के दर्शन देता है। So God Almighty loves all the saints, and whenever a disciple takes the darshan of God Almighty and he manifests God Almighty, then God Almighty also takes the form of the master of that disciple, and he gives him darshan in the form of that master only. लाख कोस जो गुरु बसे दीजे सुरत पटाए, लाख कोस जो गुरु बसे दीजे सुरत पटाए, शब्द तुरीय सवार है वो पल पल आवे जाए। तो कहते हैं कि गुरु अगर लाखों कोस दूर हों, कहते हैं कि गुरु इंडिया में है और शिष्य समुद्र पार है,
तो कहते हैं कि अगर शिष्य के अंदर गुण है तो शिष्य 1 सेकंड भी गुरु से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो भजन सुमरन करके अंदर जाके शब्द को प्रकट करके और ये दूरी दूर हो जाती है, और जब चाहे तब वो गुरु से मिलता जुलता रहता है। So Kabir Sahib says that if the master is 7 seas apart, if the master is in India and the disciple is abroad, and if the disciple is true and he has manifested the master within, then the master is forever with him and he is not away even for a second. तो इसलिए कहते हैं अगर शिष्य के अंदर गुण है, वो सदगुरु के हुक्म का पालन करता है, रोजाना 4-5 घंटा मेहनत करता है, तो वो दूरी उसके लिए नहीं है। वो चाहे कितना भी दूर है, वो शब्द तुरिया सवार होए, छिन आवे छिन जाए, वो शब्द के ऊपर सवार होकर के गुरु के पास 1 सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में आता है। So if the disciple has the gunas and he is doing his devotion, then he has manifested the master within, and he travels on the Shabd, and in a second he can be with his master whenever he wants, on the riding on the Shabd. तो इसी तरह से बहुत लोग सोचते थे कि भाई सतलोक सचखंड नामी बहुत दूर है, शायद कितना योजन दूर होएगा, वहाँ जाने में कितना लंबा समय लगता होगा। लेकिन तुलसी साहब ने शेख तकी को बताया है कि हे तकी, वो परमात्मा का लोग कितना नजदीक है। तो कहते हैं पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इसी परदाई सिया के जरा पार देखना। तो कहते हैं जो एक पुतली है, काला है उसमें, और काला के अंदर एक तिल है, छोटा सा, सबको बराबर, उसी से ये सब दिखाई देता है। तो कहते उसी के थोड़ा पीछे देखना तो सब खंड ब्रह्मांड सतलोक अनामी सब उधर ही है। So Kabir, people may feel that then he can have the attention of the soul come to the 10th door and he can manifest the master. सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राए, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राए, 7 समुंदर की मसी करूं गुरु गुण निकाल जाए। तो सब कुछ बयान करके कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि 7 समुंदर की मस करके 9 खंड पृथ्वी का पेपर बना के, जितने भी दुनिया में पेड़ पौधे हैं सबका कलम बना के, और वायु वेग से लिखा जाए, तो ये सारा सामान खत्म हो जाएगा, गुरु का महिमा खत्म नहीं हो सकता। So Kabir Sahib, after saying all of this, he says that if I make ink out of all the 7 seas, and I make paper from all the land mass, and I use all the trees and करके सब जानकारी हमें सत्संग के जरिए मिलती है। एक सत्संग ही है जो सत्य असत्य का ज्ञान होता है, और हमारे अंदर गुरु का प्रेम और प्यार बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, और मानव शरीर की कीमत का पता चलता है कि मानव शरीर क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए था। This realization of the reality of truth comes only in a satsang, when the masters explain what the purpose of coming into. दूर हो गए हो, किसी तरफ के नहीं हुए। So those who hold on to the word of the master, they get salvation from this world, and those who hold on and continue holding on to the world, then they do not belong to anybody. They go back into this ocean of life and death. पहले दाता शीश भया जिन तन मन अर्पा। कहने का मतलब कि जब हम तन मन धन सब गुरु को देके गुरु का बन जाते हैं, तो गुरु हमारा बन जाता है, अपनी सारी बरकत लेके हमारे अंदर प्रकट होता है। तो कहते हैं पहले सिख को ही देना पड़ता है गुरु को, और जब तक सिख नहीं देता है
तो गुरु के दात से वो दूर रह जाता है। तो इसीलिए पहले दाता सिख भैया जो तन मन अर्पा शीश, और पीछे दाता गुरु भैया जो नाम दिया बख्शी। नाम बोला तो सब प्रकट कर देते हैं, जो सबका आधार है। So Kabir Sahib says that when a disciple comes to the master, who is the first giver? So the Kabir Sahib says the first giver is the disciple, because he has to give his mind and body and wealth, everything he has to surrender to the master. And when he is able to surrender that, then the master showers his grace, and then he graces him with now. That is, he manifests the sound current within. So when we go to the master, it is first we have to get free from the ego of our wealth and our mind and body, and only then we are able to get the grace of the master. इसके लिए महाराज जी बलक बुखारे बादशाह का कहानी बताते थे। बलक बुखारा जो था इब्राहिम बादशाह, वो क्या करता था, 7 महले का महल था और आकाश के ऊपर उसने चांदी की खाट बिछा रखी थी। तो उस पे रात के शाम के समय मालिन आके 1.25 मन फूल की सैया बिछा के जाती थी। तो ये रात को बादशाह ऊपर आता और एकांत में बैठ के वो फूल की सैया पे और बैठ के अल्लाह की इबादत करता था कि हे मालिक, हे अल्लाह, तुम कब दर्शन दोगे। So Sanji in this regard used to often tell us a story about Balak Bukhara. He was King Ibrahim, and he had devotion to God Almighty, and he had this palace of 7 floors, and on the terrace of his palace, every evening he would have his attendants place about 250 kilos of flowers, and he would make a stage of those flowers, and in the evening he would then sit on that stage and pray to Allah. तो ऐसे ऊपर बैठ के इबादत करता था और एक संस्कारी आत्मा थी, भटक गई थी। तो जो भी संतों की ड्यूटी होती है, संस्कारी आत्मा दुनिया के कई कोने में भी हो, वो जरूर उसको जागृत करते हैं। तो कबीर साहब जी मौजूद थे काशी में। तो वो एक दिन जो है कि वहाँ पे एक पुजारी के रूप में बड़ा पगड़ी बांध के, बड़ा कुर्ता जुब्बा पहन के ऊपर जब वो इबादत में बैठा था तभी घूमने लगे लकड़ी लेके। So he had past impressions, and whenever there are people who have these past impressions, then the living masters of their time, they find such souls and they go and get the salvation to those souls. So Ibrahim was like this, praying to Allah, and he used to have this habit of laying down flowers and praying to Allah. Kabir Sahib was the living master during that time, and Kabir Sahib felt that I have to bring this soul into my fold because he is misled, he is going astray. So he manifested like a person who takes care of camels. So he manifested with a big turban and a big kurta pajama, and he started roaming with a stick on that terrace. घूमने लगे, लकड़ी की आवाज आई तो देखता है तो कोई आदमी बुजुर्ग घूम रहा है, तो उसको बड़ा बुरा लगा। वो उठ के गया, बोलता है भाई तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। So when Kabir Sahib started moving around on the terrace with his stick, he opened his eyes and he saw that he wondered who is this old man moving around on my terrace with a stick and dressed like this. So he went up to Kabir Sahib and asked him as to how come he is roaming like this on his terrace. तो देशदारी कबीर थे, वो कहते हैं कि मैं उड़ा रहा हूँ,
मेरा ऊँट खो गया है, मैं उसको ढूंढने के लिए आया हूँ। So he asked the Kabir who was dressed up in this attire, and he asked him as to what he was doing on the palace terrace. So Kabir Sahib told him that I take care of camels and my camel is lost. So I have come to search for my camel here. तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बोलता है कितना मूर्ख है, कहीं 7 माले के ऊपर ऊँट आ सकता है? हाँ, कितना मूर्ख है तो जो इतना ऊपर आके ऊँट दौड़ रहा है। So Ibrahim got very annoyed. He told him that you are such a big fool. Can a camel ever come on 7 floors and roam around on the terrace? How can you even imagine? तो बाद में वो कहते हैं कि मैं तो मूर्ख जरूर हूँ, लेकिन वो इब्राहिम सब मूर्ख है जो इतना ऐसा आराम में कहते हैं कि बैठ के फूल की सैया पे वो अल्लाह को पुकार रहा है। तो ऐसा सुख और ऐसा आराम में अल्लाह कहीं मिलते हैं क्या? So Kabir Sahib told him, yes, I am a fool indeed, but that Ibrahim, he is 100 times bigger fool. Because he is sitting on these flowers and everything, decked up on that flowers, and he is sitting and praying to Allah, as if Allah is going to manifest in such luxury of his. तो बाद में उसको लग गया, वो देखते 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 बड़ा विचित्र आदमी बेधड़क बात करता है, वो देखते देखते गायब हो गए। So that shook Ibrahim, what Kabir Sahib had said, and then he, in a moment, Kabir Sahib vanished from that place. So he kept seeing. He did whatever Kabir Sahib had said did affect him. और वो मूर्ख उसके मन में बैठ गई। अब वो गया, रात भर नींद नहीं आई। बोलता है कौन आदमी है जो इतना ऊपर आके इतना हिम्मत से घूम रहा था, बड़ा रुआब वाला आदमी था, लेकिन बड़ा विचित्र दिख रहा था, वो कौन था? अब वो रात भर उसको नींद नहीं आई। वो सवेरे उठ के नाश्ता वास्ता करके जब 10 साढ़े 10 बजे सभा में जाके बैठा। So there, but this had very deep impression on him, whatever Kabir Sahib had said. So the image of Kabir Sahib was very much on his mind, and everything that he said. He felt that indeed he was fearlessly talking to me, though I am a king, but he was very fearless in what he had to say. And he came up and he told me all this and the attire of Kabir. So all of this kept him awake through the night. In the morning he got up, got ready, and then he went down. तो बाद में जाके बैठा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वो रात का वाकया उसके दिमाग में घूम रहा था और वो मुहूर्त उसके दिमाग से जा नहीं रही थी। तो 11 बजे के समय हाँ। So, but he kept thinking about Kabir Sahib even then, and the image of Kabir was still very much on his mind and everything that he had said. He kept thinking about it. So it was about 11 o'clock. हाँ, तो 11 बजे के करीब वही आदमी वैसे ही ड्रेस में बेधड़क जो है कि वो गेट के अंदर आ गया और सभा के अंदर सीधा चला आ रहा है रुआब में। उसको कोई वॉचमैन भी और पहरेदार भी रोक नहीं रहा है और आके महाराज के सामने खड़ा हो गया बड़ी सभा में। So while he was thinking all of this sitting on his throne with all his people, ministers and everybody around, he was thinking of Kabir Sahib. Around that time, a man suddenly walked into the hall, and none of the sentries stopped him, and he walked straight up to the throne. तो महाराज बड़े दंग से देखता रह गया। अरे रात को भी ऐसा समय आया, अभी भी देखते हैं सब लोग खड़ा है पहरेदार और ऐसा रुआब से चला आ रहा है, उसको कोई रोक भी नहीं रहा है और आके सामने खड़ा हो गया। तो फिर बादशाह पूछता है भाई तो कौन है? So when again he saw the same person walked into his assembly and stood in front of him,
he was wondering how come none of the sentries stopped him, and he so freely walking into my assembly. And he then asked Kabir Sahib as to who he was. तो कबीर बेदारी कबीर वो जवाब देते हैं कि भाई मैं तो राही हूँ, बहुत दूर से चल के आया हूँ, थक गया हूँ, ये कोई धर्मशाला है क्या सोच के मैं आया, थोड़ा टाइम आराम करके चला जाऊँगा. So when he asked Kabir Sahib, who was dressed in the same clothes as he had seen him earlier, Kabir Sahib replied that look, I am a wanderer. I've wandered from place to place, and I wanted some rest. So I've come. I think this is a place like a place for guests. Like a guest house. So I've come here, and I want some rest. So I thought maybe I'll take it here. तो बाद में वो बादशाह देखता रह गया कि बड़ा अजीब आदमी है, इसको इतना डर भी नहीं है मेरा भी, अब मेरे सामने कहता है कि ये सराय है, धर्मशाला है, यहाँ थोड़ा टाइम बैठ के चला जाऊंगा. तो कहता है अरे तुमको थोड़ा भी डर तो भय नहीं है, ये तो शाही महल को तू धर्मशाला बता रहा है. तो कबीर वो हंस के कहते हैं कि अच्छा भाई आपके पहले यहाँ कौन था. So he started thinking, and he was wondering what to answer this person who asked such a vague question. And he then told Kabir Sahib that you are calling this a guest house, you are calling this like a dormitory, and you are not even seeing I am a king, and this is the assembly, and you have walked into a palace, and you are calling this a guest house or like a dormitory. What is this? So वो पूछता है कि अच्छा आप बताओ आपके पहले यहाँ कौन था. तो बोलता है मेरा पिताजी थे, उनके पहले उनके पिताजी, उनके पहले उनके पिताजी. तो बोले वो लोग कहाँ गए? बोलते वो लोग गए, और फिर जहाँ आना जाना लगा है कल तुम भी जाएगा, जहाँ आना जाना लगा वो धर्मशाला नहीं तो क्या है. So Kabir Sahib said that okay, then tell me who was ruling, who was the king here before you. So he talked about his ancestors. So he said, okay, so before that ancestor who was there was another ancestor. So like that his father, grandfather, everybody, he said. Then Kabir Sahib asked him, where are they? So the king told him, they are gone. So that means they have gone from here, they have come and gone. Your father has come and gone, your grandfather has come and gone, all your ancestors have come and gone. You will also go. So where there is a place where people are coming and going, it has to be a guest house. तो उनको लग गया अरे रात को भी सच बोला और अभी भी सच बोलता है, ये कोई ताकत है. बस वही मूरत उनके दिल में बैठ गई और वो बोल के वहां से निकल गए और वो दिल में बैठ गए. उन्होंने क्या किया, तुरंत वो मूरत भूल नहीं रही थी रात भर. अभी उसने दोबारा देखा, अच्छी तरह से वो बैठ गई. अभी उसने तुरंत अपना ऊपर से नीचे तक कपनी मंगाया और सब पहन के और हाथ में ये लेके छोटा और निकल दिया कि वो मूरत का कहाँ मिलेगी, उसको तड़प हो गया उसका. So that shook up Ibrahim, and he felt that yes, indeed, last evening also this same person had come and told me he had told me about the truth, reality, and today also he is making me aware of this. So he is definitely a great soul, and he then got fixated on the image of Kabir Sahib, because throughout the night also he was thinking about Kabir Sahib, and then morning also he saw him. So the image of Kabir Sahib got fixated within, and he decided that I will now renounce my kingdom, and he changed his attire, and with a stick and a bowl he moved out in search of Kabir Sahib. तो वहाँ से दुबई और पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान में आया. So then he he came from Dubai and Pakistan, and by that route he came into India. और वहाँ
वहाँ आकर के बहुत दौड़ते दौड़ते उसको पता चला कि बनारस में कबीर साहब हैं, वो अच्छे महात्मा हैं। So he searched for the master, and he was told that in Varanasi there is Kabir Sahib, who is a great master. तो बाद में वो वहाँ पे आया, जब कबीर साहब को देखा तो भरोसा हो गया कि यही आदमी है, यही वो है जो रात को ऊपर आया हुआ था। So when he saw Kabir Sahib, he realized that yes, indeed, he is the same person who had come that night above. तब हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि मुझे भी आपकी सेवा में रख लो। So he requested that Kabir Sahib keep him in his seva. तो बाद में कबीर साहब कहते तू बादशाह है, मैं गरीब जुलाहा हूँ, मैं तेरा खाना पीना कहाँ से ला के दूंगा और तेरे को कपड़ा कहाँ से ला के दूंगा, ये सब मेरे से होने वाला है क्या? So Kabir Sahib said that, see, you are a king and I am a weaver, and I do not have the means to give you the kind of food you are used to eating or the clothes you are used to wearing, so I cannot do all that for you. तो वो कहता है कि महाराज, हाँ, मैं जो है सेवक बन के, दास बन के आया हूँ, मैं बादशाह बन के नहीं आया हूँ। देखो मैं कपनी पहन के आया हूँ, बादशाह नहीं हूँ, आप मुझे सेवक समझ के मुझे सेवा दो। तो माता लोई ने उसकी सपोर्ट किया कि महाराज जब वो इतना करता है कि आप जो दोगे पहन खा लूँगा, जो दोगे पहन लूँगा, आप जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जो काम बोलोगे वो मैं करूँगा, तो आप क्यों नहीं रख लेते हैं? So Ibrahim told Kabir Sahib that I have not come here as a king, I have come here as a sevadar. I request you to keep me as in your seva, and whatever you give me to eat, I will accept that, and whatever you give me to wear, I will accept that. However you keep me, I will accept that. So please keep me as your accept me as your sevadar. Then Mata Loi also supported him and told Kabir Sahib that indeed he has come, he has left his kingdom behind, he is not come as a king. So why don't we help him and let him do his seva? कबीर साहब रख लेते हैं। आप साड़ी बुनते थे, उसको धागा जो है कि बंडल बनाने का वो काम दिया था, तो ये काम करते करते 6 महीने हो गए, नए नए लोग आके नाम दान लेके जाते थे, और 6 महीने हो गए कबीर साहब ने इनको नाम ही नहीं दिया। So he was given the work of making the thread for the saris, which Kabir Sahib would weave, and that way he would do seva. Now during that period, several people came, got initiated and left. Almost 6 months had passed, but he was only doing his seva. He had not been given initiation. तो बाद में माता लोई प्रार्थना करती है कि महाराज नए नए लोग आते हैं, नामदान लेके जा रहे हैं, ये बेचारा 6 महीने से सब कुछ छोड़ छाड़ के आके आपका चाकरी कर रहा है, सेवा कर रहा है, और इसको नाम भी नहीं दिया कि वो कोई सुमरन करे। So Mata Loi requested Kabir Sahib that he is doing so much seva, and so many people have come and got initiated and left, but you have not yet given initiation to him so that he can do his simran. तो कबीर साहब कहते हैं कि लोई अभी बर्तन साफ नहीं है, तो लोई कहती है कि महाराज कैसे पता चलेगा, वो तो अंदर की बात है। तो कहते एक काम कर, झाड़ू लगा के कुछ पूरा कचरा राख बीख लेके ऊपर खड़ा रहना 5 बजे, और वो जो सवेरे 5 बजे स्नान करके गंगा से वापस आता है, तो उसके चोरी से वो रात को अंधेरे में उसके सिर पे उलट देना, और वो सब कचरा डाल देना और सुनना वो क्या बोलता है। So Kabir Sahib told her that see, he is not yet ready, his vessel is not yet ready. So Mata Loi said, how will I know that? That is something internal. So he said, okay, what you do is you just gather some filth. When you move the broom around, you collect all that filth and
go and stand on the terrace at 5 a.m. when he goes and has a bath in the Ganges and comes back. Then you, from the terrace, put all of that filth on him. And then let us see what he has to say. तो बाद में लोई ऐसे किया, 4:30 बजे से ऊपर जाके बैठी थी, ये जाके 5 बजे स्नान करके आके ऐसा ही सदगुरु करते बैठते थे। तो जैसे ही वो कदम अंदर रखते हैं और ऊपर से वो कचरा ऊपर डाल दिया, सब काला राख, तो सब ऊपर से नीचे तक काला हो गया। और गंगा जो है काफी दूर थी, तो बड़ा गुस्सा आया उनको, अरे कौन है मूर्ख, उसको देखता नहीं क्या, हाँ मेरे ऊपर सब राख डाल दिया, मेरा सब कपड़ा खराब हो गया, अगर मैं बादशाह होता तो उसका सिर छेदन कर देता। So accordingly, Mata Lohi at 4:30 waited on the terrace, and she waited for Ibrahim to come back. And at 5 o'clock, when Ibrahim had his bath and wore clean clothes and came in, as he was stepping inside the house, she put all that filth, which was a lot of ash and other dirt, on him, and that spoiled all his clothes. And he looked up in anger, and he felt that now again he will have to go and take a bath, etc. So he got very angry, and he said, who is this person who has thrown all this dirt on me? If I had been Ibrahim, I had been a king now, I would behead this person. तो माता लोई कांपने लग गई, वो फिर स्नान के लिए वापस चला गया। तो बाद में जब लोई उतर के नीचे आए तो कबीर साहब पूछते हैं क्या कहा उसने, महाराज ऐसा ऐसा बोला। तो मैंने कहा ना अभी बर्तन साफ नहीं है, अंदर है बेटा अहंकार। So Mata Lohi started trembling on the terrace, and she came down and told Kabir. So Kabir Sahib asked her what happened, and she related this. So Kabir Sahib told her that, see, I told you, his vessel is not yet ready. He still has this thing about being a king. तो बाद में फिर स्नान कर जो है कि कबीर साहब के सामने आए तो पूछा, तो बोला ऐसे ऐसे बोला। तो कबीर साहब ने कहा देखो अभी भी है अंदर। तो बाद में और 6 महीने चला गया, 6 महीने और टाइम सेवा में गया। तो बाद में एक दिन कबीर साहब ही कहते हैं कि अब 12 महीने हो गया, 12 महीने एक सेवक का गुरमुख को एक वो होता है, तो अब बर्तन साफ हो गया, अब इसमें कुछ रखना चाहिए। So again 6 months passed, and Kabir Sahib now told Mata Lohi that this much period has cleansed him. So he called Mata Lohi again. तो बाद में माता लोई कहते महाराज अंदर की बात है कैसे पता चले? तो कहते एक काम कर, 2 दिन का सड़ा हुआ पानी ले लेने, बर्तन साफ किया हुआ, जिससे दुर्गंध आता हो, ऐसा सड़ा पानी लेके ऊपर खड़ा रहना, और जब वो स्नान करके आता है ना तो उसके सिर पे डाल देना और चुप के सुनना वो क्या बोलता है। So he told Mata Lohi that I think Ibrahim is now ready for being initiated. So she told him that how am I to know? So Kabir Sahib told her that okay, now this time you take that dirty filthy water which we after cleaning the vessels, whatever is that rotting smell and that in that water, take that water and stand on the terrace, and then you pour that on him when he comes. तो उन्होंने 2-3 दिन का सड़ा हुआ पानी लेके ऊपर खड़ी थी। तो जब वो स्नान करके 5 बजे अंदर आने लगा तो ऊपर डाल दिया और डाल के बैठ गई, छुप गई। तो ये जो है दुर्गंध आने लगी सब। तो हाथ जोड़ के और ऊपर हाथ करके कहता है कौन महापुरुष मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया किया, कहीं इससे भी ज्यादा गंदगी मेरे अंदर है, परमात्मा उसका भला करने दो। So she collected the water of after washing these utensils, and she collected it and went on the terrace, and this water was stinking. So when he came, she poured all that water on him, and all that stink
he was thinking after he had come from his bath. But this time with folded hands he looked up and he said, who is that great man or great person who has put this filth on me? Because I am a filthier person. So he has at least done that as a blessing to me. So God showered grace on such a person. तो बाद में फिर स्नान के लिए गया तो जब मलोई अंदर आई तो कबीर साहब ने पूछा क्या कहा महाराज ऐसे सब बोला हाँ बर्तन साफ है अब उसमें कुछ रखना चाहिए। तो बाद में वो आते ही उसको रूम में बुला के लेके गए और रूम में बुला के ले जाके बिठा के उसको नाम दान दे दिया। So when he went for his bath, Mata Loi came down and related everything. So Kabir Sahib said that yes, indeed his vessel is now clean and empty. And after he came back from his bath, Kabir Sahib gave him his initiation. तो जैसे जैसे अब अंदर अहंकार तो था नहीं और जैसे जैसे वो नाम देते गए वैसे वैसे उनकी रूह चढ़ाई करते गई और सतनाम कहते ही सतलोक पहुंच गई। अब वो संत महात्मा हो गए। So when Kabir Sahib started initiating him, as he was initiating and giving him word by word, his soul started withdrawing, and that came to the 10th door. And by the time he got the 5th name, he was already in Satsang Satlok. So that he became a saint on that day. तो बाद में नाम देने के बाद में 2-4 दिन हफ्ता रहने के बाद कबीर साहब ने कहा कि अब जो तुम्हें मिलना था वो मिल गया, अब तुम जाओ तुम्हारे देश में जाके सत्संग करो और लोगों को जीवों का उद्धार करो। So Kabir, then after staying for a few days, then Kabir Sahib told him that you have got what you wanted. Now you should go back to your place and you should salvage souls there and do general good there. तो जाके अपना राज्य करते हुए जीवों को जिताओ। तो कहते महाराज वो राज्य किस काम का, आपने मुझे वो राज दिया जो जिसका कोई बयान नहीं। So Kabir Sahib says you can go back and rule your kingdom and you can salvage souls there. So Ibrahim said, what is the use of such a kingdom? You have given me the infinite kingdom. So there is no need for such a small kingdom anymore. तो कहते भाई एक बार जाओ जाके आओ अपने देश की तरफ। तो वो गुरु का हुक्म मान के एक पुरानी बुदड़ी लेके उसको सीते 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 निकले फकीर के रूप में। So following the instructions of Kabir Sahib, he went back to where he had come from, and he took an old rag and he was stitching that rag while he was going back to his place. और उनके राजमहल के बगल में नदी बहती थी और वो शाम को घूमने के लिए आते थे उस नदी के किनारे। उसी जगह पे जाके और नदी पार करके और उस पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ पहले वो बैठते थे। So he reached his kingdom and there was a river near his kingdom where earlier he often would go and sit on the banks of that river. So he crossed that river and he sat there with that rag and he was stitching that rag there. तो कहते हैं मंत्री आया देखा बादशाह जैसा लगता है, जा करके उसके घर में बता दिया। तो घर के लोग भी रथ सजा के लेके आए, लड़के औरत सब लोग आके प्रार्थना करने लगे कि महाराज आप घर में चलो, आपका अभी लंबा समय हो गया, प्रजा आपको याद करती है। So minister noticed him and he felt that he looks indeed like the king. So he went back and he got the family members and others, and all of them came with the chariot, and they then requested him that he should come back. His throne is awaiting him and people want him back as the king. So they all requested him. तो बाद में बड़ा लड़का हट करने लगा, नहीं आप आना ही चाहिए, एक बार वहाँ आके आओ, जाओ, ऐसा वैसा बहुत प्रार्थना करने लगा। तो इन्होंने क्या किया, जो सुई सी रहे थे कुदड़ी, वो सुई तोड़ के नदी में फेंक दिया, नदी बहती हुई नदी। कहते वो सुई ला के दो तो मैं आऊँ। So
so everyone was pleading with him to come back, and he was refusing. His elder son was also pleading a lot for him to come. Then eventually he said, okay. He took that needle with which he was stitching that rag, and he broke that needle and threw it in the river. And he said, okay, I will come if you get me that needle which I have thrown in this river. तो कहते महाराज ऐसा हजारों सुई मिलेगा, आप लौट के आओ। कहते नहीं, हमको वही सुई चाहिए जो मैंने फेंका है। So his son said, I will give you thousands of needles like that. There are lots of needles there, I can give you those. But he insisted, no, I just want that needle which I have thrown in the river. तो बाद में वो कहता कैसे मिलेगा, जमीन पे गिरे तो मिलने वाला नहीं, और वो बहता हुआ पानी में आपने फेंक दिया, वो कीचड़ में कहीं बैठ जाएगा, वो कैसे मिल सकता है? So his son told him that needle is such a difficult thing to search, and even if it is on the plain ground, you have thrown it in a flowing river, it may have got stuck at the bottom somewhere. It will be difficult to search it. तो बाद में वो बादशाह कहता अच्छा मैं ले लो, मैं मंगा दूं, तो ये बोले हाँ महाराज आप मंगा दो। तब उन्होंने अपनी तवज्जो एक मछली को दिया, उसको हुक्म किया, मछली तैरते तैरते मट्टी में गई और जमीन में धंस के कीचड़ में, और वो सुई पकड़ के तैरते तैरते बगल में आई, उछल के महाराज के ऊपर रख के और फिर पानी में चल गई। तो वो लेके कहते देख मेरे गुरु ने मुझे ऐसा राज दिया है, अब मेरे हुक्म में जो है कि सब जीव हैं, अब ये राज लेके क्या करना जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। So he told his son that okay, then I can get that needle back. So his son said, okay, if you can bring it, you get it. Let us see. So he closed his eyes and paid attention, and he paid attention on one of the fish that was there in the river, and with that attention he made that fish bring that needle back. So that fish went to the bottom and took that needle, picked that needle and came to the bank, and it came out, jumped out on the lap of Ibrahim and gave that needle and jumped back into the river. And then Ibrahim showed him that needle and said that, see, this is the kind of kingdom my master has given me. And in such a perpetual kingdom, what is the use of me coming to this kingdom of yours, which is there only for a few days, and then again we have to leave that also. तो बाद में वहाँ से उठ गए और उठ के ऐसे ही सब प्रचार करते करते वो एरिया में ही सत्संग और प्रचार करने लगे। And thereafter then he was preaching on the teachings, and he was going from place to place. सतनाम के पट तरे देवे को कचुनाई, सतनाम के पट तरे देवे को कचुनाई, चाले गुरु संतोषिए अवसरही मन माई। तो अब कबीर साहब जी सारा देते हैं कि सतनाम के बराबर और दुनिया का कोई भी रत्न नहीं है, कोई भी चीज बराबर नहीं है। मैं क्या लेके उसकी तुलना करूं, क्योंकि सतनाम के बराबर और कोई भी बड़ा रत्न नहीं है। कहते हैं कि वो रत्न जो रंचक तन में संचरे सब तन कंचन होए, वो थोड़ा भी अंदर प्रकट हो जाए तो हमारा करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं और तन और मन दोनों निर्मल हो जाता है। कहते हैं मैं अपने सद्गुरु को क्या देऊं जो उन्होंने मेरे ऊपर नाम का उपकार किया। Kabir Sahib says that the priceless jewel of Satnam, which has been given by my master, it is incomparable with any other jewel that one can find in this world. The priceless Satnam, the jewel that has been given by my master, that has made my entire body with luminance. It has filled it with luminance. It has burnt away all the
infinite amount of karmas that were built in, and it has made my mind and soul pure. So for such a priceless jewel that has been given by my master, what can I possibly give in return? कहते हैं वो जो रत्न है जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो इस जीव को इस भवसागर से पार कर देता है। बाकी रत्न तो जीव को पार तो नहीं कर सकता, करोड़ों रुपए दे सकता है, लेकिन उसका संबंध शरीर से है, शरीर के साथ यही रह जाता है। लेकिन ये जो रत्न है ये जीव को जो है कि सत्व सत्संग लेके जाता है, ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाता है। So he says that this priceless jewel of Satnam that can get me salvation, that gets me free from this ocean of life and death and takes me to God Almighty. Unlike the costliest of jewel that we get here, which can give us crores of rupees, but that is all linked to the body, and when we leave the body, that also has to be left behind. It cannot get us salvation, unlike the priceless jewel of Satnam that has been given. तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं क्या लेकर के अपने गुरु को नाम के बराबर क्या मैं उसको दे दूं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज नहीं, ये हवस मेरे अंदर ऐसे ही पड़ी रहेगी। So therefore Kabir Sahib says that what is it that I can possibly offer to my master for such a priceless gift that he has given me, such a priceless jewel that he has given me. So this want for giving back to the master will be perpetually with me, because I will never be able to fulfill by giving anything in return for such a priceless gift. सतनाम के पट तरे देवे को कचुनाई, सतनाम के पट तरे देवे को कचुनाई, क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मन माई। कल सुबह